दोस्तों, जमाना तेजी से बदल रहा है। कोई भी हादसा कब कैसे हो जाए इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वीआईपीज़ के परिवहन के लिए एक बहुत ही सक्षम बुलेट प्रूफ कार की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर इन गाड़ियों का उपयोग सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन अपने बचाव के लिए करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी गंभीर परिस्थितियों से निकलने के लिए इन गाड़ियों का उपयोग करते हैं। इस बुलेट प्रूफ कार को किसी भी समय किसी भी वातावरण में खतरों से बचने के लिए सक्षम होना ही चाहिए, चाहे सड़क खराब हो या अच्छी, बाहर युद्ध हो या फिर महायुद्ध, मगर अंदर बैठा हुआ वीआईपी सुरक्षित रहना ही चाहिए। और यही बात इन गाड़ियों को बाकी गाड़ियों से अलग बनाती है। इसी तरह के आर्मर्ड कार्स को डेवलप करने में और उनकी टेस्ट करने में बहुत खर्चा होता है, जिसमें कि इन बुलेट प्रूफ कार्स के सस्पेंशन, स्ट्रक्चर और फीचर्स में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाते हैं। जहाँ पर गाड़ियों की ग्लास में पॉलीकार्बोनेट का यूज़ होता है, जिसमें कि बाहर से किया हुआ कोई भी हमला विफल साबित होता है। गाड़ियों की बॉडी हार्डेस्ट स्टील से बनी हुई होती है, जो किसी भी ब्लास्ट को सहन करने की क्षमता रखती है। इन गाड़ियों के टायर्स भी पंचर नहीं होते। अगर किसी अनसर्टन कंडीशन में पंचर हो भी गए तब भी ये गाड़ियाँ 50 या फिर उससे अधिक तक किलोमीटर्स तक आसानी से चल सकती है। और तो और गाड़ियों में ऐसे ऐसे सेफ्टी फीचर्स होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर इन गाड़ियों को बेचने से पहले सैंपल यूनिट को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर कार्स की बुलेट प्रूफ टेस्ट देखने वाले हैं। There are danger situations in which special protection is necessary. For over 80 years, Mercedes-Benz Guard special protection vehicles have withstood tough impacts. The youngest member of the armoured fleet, the new E-Guard. Even larger caliber weapons cannot puncture the armor. But the new E-Guard is not only impressive where security is concerned. Der spannendste und tatsächlich aufregendste Moment ist die Zertifizierung des Gesamtfahrzeugs. Hier kommt es auf jeden Schuss an und es darf nichts passieren. Die Zertifizierung eines Sicherheitsfahrzeugs wird durch das Beschussamt durchgeführt. Die Zertifizierung ist zweigeteilt. Zuerst wird das Fahrzeug beschossen und im Nachgang angesprengt.
today field testing our level 4 armor-piercing ballistic panels in our police interceptor. The level 4 panel is capable of stopping an armor-piercing round. In addition to our official certification that we do at an independent USTL lab, we conduct our own testing to demonstrate the full range of capability of the panel. We field tested several rounds, and the armor-piercing rounds are the M2AP, the M61, and the 7.62 54 RLPS round. In addition, we also tested the M193, the M80, M43, M855, and several handgun rounds that you would typically find 9mm, a 38, 40 caliber, 45, and also a 12-gauge shotgun 1-ounce slug. We validated after each shot that there were no penetrations through the interior trim panel on the car, so we stopped every single round. This level 4 panel is an option on our police interceptors and is an industry first for armor-piercing protection as a factory-installed option on a pursuit-rated police vehicle.